Good morning. As usual, we are late. We are supposed to leave by 5 o'clock. ಏನು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 6:30 already. We have not left yet. Boys! ನೀನಾಗಲಿ ಗಣೇಶ್. Very good morning. Good morning, good morning. Good morning is very late. ನಡಿ ಬೇಗ Four musketeers. ಶ್ರೇಯಸ್, ಜಿ ಎನ್ ಗೊಂದಿಮನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿ ಬಾಬು, ಸುಮಂತ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ್, heading towards Pune, Mahabaleshwar, Shirdi. Have a nice trip. Have a nice weekend. Chill guys. Thank you. Which color you want? Tell me. We've taken our first break in ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವೆಯ್ಟು? ಹಾಂ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಾ? 70. ಇಡ್ಲಿ ಗುಡ್, ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಡ್ದಿ. Shut up and sit down. Rontak. First time he is doing some work. First time. Today's task, clean the windshield. ವರ್ಷ ಬೇಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೀನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಏನಂತೀಯ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಘಟಪ್ರಭಾ ರಿವರ್. ಸನ್ಸೆಟ್ is done.
taken a very good time lapse and very good drone shots. When you're Belgaum, another 400 something kilometers to Pune. It's day 2. We only could make it to Satara. Now we are going towards Mahabaleshwar. Let's go. Pongo? Missile for breakfast. Missile and poha. Best breakfast. Poha best. We've reached Mahabaleshwaram. We're at Penna Lake. Penna. सेल्फी झालं का मॅडम पाठीमागे या प्लीज. This is the traffic scene. Natural spring water. Take glass. Good cold water. So this is the Arthur Point, which is filled with people. I don't want to take a selfie. You guys want to take any people? It's a Sunday. What else do you expect? Lesson learned any what? Hey, there are 6 points basically. Hey, that's spelling it. Arthur, ARTHUR, Arthur's Point. So if you're coming here, never take a guide because it is of no use. Pay 300 rupees. Waste, he'll just take you to that point and explain everything because it is already written there. You don't need any explanation. Just go to that place, see. If you ask me, don't come here on weekends. Ganesh, and lesson learned.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. 220 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್. ಇನ್ ಪಂಚಗನಿ 150 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್. ಏನ್ ಗುರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಪ್ಪ. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ It's day 3. When you travel, it's very important to exercise. That's how you can keep yourself fit. We are right 50 kilometers before Shirdi. We're going to go to the temple today. ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀಯ ನೀನು. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಂಧನ. Aurangabad. This is army base. Aurangabad army base. Wish you a happy journey. Thank you. So finally we have arrived to Ellora Caves. I will take you inside. और ये जो है एल्लोरा की गुफा है, टोटल 3 किलोमीटर के एरिया में 34 केव बना है. तो माउंटेन से स्टार्ट होता है तो लास्ट वो माउंटेन तक रहता है, पूरा 3 किलोमीटर के एरिया में. तो ये माउंटेन को जैसे सह्याद्री माउंटेन के नाम से जाना जाता है. और जो ओरिजिनल नेम है सर इसका तो बसाल्ट. तो बसाल्ट का जो स्टोन होता है, एक केव से दूसरे केव तक जा सकता है. हाँ जा सकते हैं, जैसे जाओगे वैसे ही अंदर से आता कनेक्टेड नहीं सर. तो ये जो गुफा का स्टोन का नेम है डिसॉल्ट. तो डिसॉल्ट का जो स्टोन होता है उसको आप मंदिर बनाने में लाइट किया जाता है. बहुत सॉफ्ट होता है लेकिन उसका लाइट जो है तो बहुत नहीं होता. किसने बनाया है? चालुक्य साम्राज्य राष्ट्रकूटा. जिस तरह अपना घर बनाते आपको नीचे से ऊपर लेके जाती है, ये जो है तो टॉप टू बॉटम. हाँ. ऊपर से नीचे लाएगा सिंगल स्टोन से. इसमें कोई बाहर का मटेरियल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल किया गया नहीं. मतलब पूरा रॉक कटिंग. अच्छा. और टोटल 34 केव बनाए. तो टोटल 34 केव बनाने में टोटल 10 जनरेशन लगाए. 10 जनरेशन आपने बनाए, फिर आपके बेटे ने, फिर उनके बेटे ने सर. लेकिन क्यों टॉप से क्यों बनाया, नीचे से क्यों नहीं बनाया? अभी ये जगह है. हाँ. नीचे से बनाते तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता सर. हाँ हाँ. इसलिए स्टोन को जो है तो सपोर्ट देते गए ना सर. हाँ. बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए जगह बनाते गए ना. अच्छा जगह अच्छा. बनाना. तो ऊपर से. हाँ हाँ. वैसे बनता था इसमें. यस, मशाल लटकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था. अब बहुत सी जगह ऐसा होल देखो क्या. ये पूरा होल था. पहले पूरा जंगल एरिया था, शेर का उसका डर रहता था, इसलिए लकड़ी लगा थी. चलो यार. So this is the dining hall. It's very huge. Huge. फर्स्ट कलश बनाया, बाद में नीचे लाए गए सर. क्या बनाया? पहले कलश बनाए. हाँ हाँ. बाकी का टॉप टू बॉटम में. हाँ. लेकिन इसका पहले कलश बनाए गोपुर, और बाद में नीचे लाएगा. अब बाकी का टॉप टू बॉटम. अब ओनली वन केव बनाने में 200 ईयर्स लगाए. तो 200 इसलिए लगा सर क्योंकि ये गुफा का जो वर्किंग था बहुत हार्ड था सर. और डिज़ाइन ज़्यादा था, इसलिए गुफा को ज़्यादा समय लगा है. एक आदमी जो है सर तो सिर्फ 20 साल तक ही काम किया करता था. इतना वर्किंग हार्ड था और डिज़ाइन ज़्यादा था.
This is the Ellora cave. This is the main temple. We are not going inside because there are so many people. So you have to pay 40 rupees entry fee to go inside, and we paid 500 rupees for the guide, which is a private guide. I heard that the government guide charges 100 rupees per person or 400 rupees or something, and I'm not sure of that, but yeah, but there are a lot of temples. If you're coming here, you need at least 3 hours to see all the temples. All the cave, not the temples. Sorry. Wanna? Let's go! I wish I could fly my drone here. Shut up and sit down. Expensive, but favorite place. Today is 1st December 2020. Wish you a very happy new year. We are in Mumbai. We have partied in Mumbai for New Year's. Now we are leaving towards Bangalore. So I don't think there's much to see now. So thank you very much for watching. You'll see me very soon in the next video. So bye bye.